Hello everyone. See, today we are going to talk about excretion. Now, let's first understand excretion in a very simple terminology or in a very simple way. Okay? See, basically, we know that our circulatory system, okay, human circulatory system, it is not only responsible for the delivering food and oxygen to every cell of our body, okay, but it also carries waste away from each and every cell of our body. And now these waste, naturally we can't keep these waste in our body, right? So these waste need to be removed from our body. And this process of removal of waste, it is called excretion. So this is a very simple explanation of excretion. So what is excretion? It's a process of removal of waste from body. And this is called excretion. This process is called excretion. Now let's understand excretion in a scientific terminology. See, we know that our body is made up of cells and each cell respire. All these cells respire so that it can live. And during this cellular respiration, there is some chemical reaction taking place. And this chemical reaction, which is taking place during the cellular respiration, it is known as metabolism. So, during cellular respiration, chemical reactions take place in our body, and that is known as metabolism. Now, what happens is, due to this metabolism, there is some waste produced at cellular level. So, due to metabolism, produces waste products, and these waste products are carbon dioxide, water, salts, urea, and uric acid. You need to remember these waste products. So, there is one. During cellular respiration, metabolism happens. During metabolism, waste products are generating. These waste products are carbon dioxide, water, salts, urea, and uric acid. Now, these waste products, because they are waste, they are not needed by our body naturally. And these waste need to be excreted. So, these waste need to be excreted via excretory organs. So just like we have digestive organs, there are some other organs in our body. Similarly, we have excretory organs. And this whole process of removal of this metabolic waste from the body is known as excretion. See guys, remember, we need to use scientific and biological terminologies now. So, you can understand the terminology in a simple way, but you need to write down in scientific terminology only. So, what is excretion? The process of removal of what? Of metabolic waste. Now we know what is metabolic waste. So, the process of removal of metabolic waste from the body is known as excretion. Now, if we talk about excretion in animals, including humans, of course, so as you people know that there are basically single cells animals and multicellular animals. So single cells animal, that is unicellular animals, they are called kind of lower animals, right? So in lower animals like amoeba, paramecium, hydra, sponges, they don't have special excretory organs. They don't need them. Why? Because they are made up of only single cells and they are very simple structured organisms.
So their requirement is different. So they don't need special excretory organs. Then how do these waste products get away from the body? So in these animals, waste products like ammonia are excreted by one process. It is called diffusion. We know what is diffusion. So through diffusion, this ammonia, these animals or these organisms, they get rid of this ammonia, which is a waste product for them. And this happens by a process called diffusion. And this happens through the body surface because they don't have any special excretory organs. All right. Now, if we talk about higher animals like human beings or other animals, okay, now they have this special organs for excretion. There are multiple animals, but in this chapter, we are going to talk about excretion in humans only. So, that we will see in our next session. So, हम किसकी बात कर रहे थे? हम excretion की बात कर रहे थे. सी जैसे हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सिर्फ फूड और ऑक्सीजन देने का काम नहीं करती, वो हमारे ब्लड में से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको ले जाने का भी काम करती है. अब हमारे ब्लड में वेस्ट मटेरियल होता क्यों है? क्योंकि हमारे ईच एंड एवरी सेल रिस्पायर करते हैं. तो जब वो रिस्पायर करते हैं तब एक प्रोसेस होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म. ये मेटाबॉलिज्म के वक्त उनके जो हमारे ईच एंड एवरी सेल है वो एक टाइप का वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं. और वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सॉल्ट, यूरिया एंड यूरिक एसिड. ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, टॉक्सिक होते हैं. सो नेचुरली वी नीड टू गेट रीड ऑफ देम. उसको निकालने के लिए हमारी बॉडी में से कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स काम आते हैं. और इस एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के थ्रू ये जो प्रोसेस होता है जिससे ये मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव होता है, उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहा जाता है. अगर हम एक्सक्रीशन इन एनिमल्स की बात करें तो दो टाइप के एनिमल्स होते हैं. लोअर एनिमल्स, जिसको हम वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं. क्यों सिंपल ऑर्गेनिज्म? बिकॉज दे आर यूनिसेल्युलर एंड देयर बॉडी स्ट्रक्चर इज नॉट कॉम्प्लेक्स. तो ऐसे कौन से एनिमल्स हैं? अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, स्पॉन्जेस, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं. अभी बिकॉज दे आर लोअर एनिमल्स एंड दे डोंट हैव एनी स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. तो अगर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं है तो ये कैसे वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं? तो ये जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एमोनिया होता है और वो दूर होता है डिफ्यूजन के प्रोसेस से. और डिफ्यूजन प्रोसेस होता है उनके बॉडी सरफेस से. क्यों बॉडी सरफेस से? क्योंकि उनमें कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते. दूसरे टाइप के जो एनिमल्स होते हैं जिनमें स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए. क्यों? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ऐसा है, वो मल्टीसेलुलर है. राइट? अभी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और एक्सक्रीटरी सिस्टम बेसिकली डिफरेंट है. बट इस लेसन में हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स की एक्सक्रीटरी सिस्टम रीड करने वाले हैं या समझने वाले हैं.